want a right to reside. I'm an Indian, I want the right to settle. Article 19 of the Constitution allows me the right to move freely, reside and settle in any part of India. So if you believe in the Constitution of India, you cannot say that Article 19 will not apply. Simple logic. What is your argument? Please. Okay. So, to start with, I think it's very important to bring to fore the fact that this whole issue, as is being projected as if it's an issue of discrimination against women, and therefore discrimination against Indians. No, all Indians. Wait. All Indians. Wait. Okay, Pushpendra. Let them see. Okay. Two-way debate. No, listen. No, if I have been asked a question, let me. अच्छा पहले आप इनकी सुन लीजिए पुष्पेंद्र जी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा who's the main petitioner in the 35A case. they बहुत अच्छा debate है. He is the main petitioner in the 35A case. So you've been a journalist and a political analyst, you know, and therefore you will debate. But Pushpendra, you'll have to listen to him first. Yeah. Okay. Thank you. All around this debate of Article 35A, we have been everywhere. It has been projected as if it is first a major issue is discrimination against the women in Kashmir. Discrimination against all Indians also. No. Yeah, that's also another point. I will tell you. See, this is the precise misinformation campaign that has been started like a They will not the case. These people No. You are totally right. You people are misleading the country. Okay, Pushpendra. Absolutely, you are misleading the country. No, gentlemen. Listen, my dear, listen. आप मिसलीड कर रहे हैं. जितने भी कश्मीरी के लोग आ रहे हैं, तमाम लोग मिसलीड कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 35A प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का धारा बनी, और आपने जो एक चीज छुपाई हुई है, जो कोई डिबेट में कश्मीरी नहीं बोल रहा है, आप ये बताइए कि 1954 के अंदर 14 मई में ये लागू होता है. लेकिन आपने इसकी कट डेट क्या बनाई? 1944. 1947 क्यों नहीं बनाई? क्योंकि 1947 के बाद जो कश्मीरी पाकिस्तान से आया था, पीओके से आया था, वो 99% हिंदू था. आपने उसको वहां की शहरियत से, वहां की सिटीजनशिप से महरूम किया आपने, और उसको सड़कों पे रह रहा है. और आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं. और आज पिटीशन एक अपील डाली गई है, एक अपील डाली गई है. ये कहा जा रहा है कि साहब वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो ऑन है. तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑन है. लिसन, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और पंचायत के लिए है, लेकिन 7 लाख लोग वोट नहीं दे सकते, पंचायत में नहीं दे सकते, विधानसभा में नहीं दे सकते. आपने 1956 में ये कौन सा निजाम मुस्तफा है आपका? ये कौन सी आपकी जमहूरियत है कि आपने 1956 में 200 वाल्मीकि परिवारों को बुलाया कि शेख साहब की गंदगी साफ कीजिए, और आज आप कहते हैं कि वो शहरी नहीं है. और उसमें सबसे इनह्यूमन काम जो आपने किया है आपने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया उसके अंदर कि वो जो लोग हैं दलित, उनकी औलाद जम्मू कश्मीर में उसको सिर्फ स्वीपर की नौकरी मिलेगी. ये कौन सा निजाम मुस्तफा आपने बनाया भाई? ये कौन सी डेमोक्रेसी? मैं इसको एक्सप्लेन करूं, व्यूअर्स के लिए मैं एक्सप्लेन करूं. 2 मिनट दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज द राइट टू रिस्पॉन्ड. काम डाउन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ शांत हो जाइए. This is a very important point and I want to explain this in 10 seconds to the viewers. Article 35A, some people say, is worse than the caste system. Because apart from being anti-women and apart from being discriminatory, Safai Karamcharis of the Valmiki Samaj, right? Safai Karamcharis of the Valmiki Samaj are living below the poverty line in Jammu and Kashmir. They are not being given equal treatment as the other citizens of Jammu and India in Jammu and Kashmir by the state government, because Article 14 is awarded to other residents of Jammu and Kashmir. 60 years back, इन्होंने कहा, 60 years back, आप पंजाब से, you got the Safai Karamcharis, and you got them to Jammu and Kashmir. Their sons and their daughters will not get equal status. Their grandsons and their granddaughters will not get equal status. Leave me. I can't go and live and work and settle in Jammu and Kashmir. Why can't they? Abhi Sudhanshu Trivedi will do it.
Sudhanshu, as the caste system is concerned, this is the worst type of caste system. Abhi John, wait. Please stop. Sudhanshu speaking. You stop. You'll respond. वो स्वीपर के अलावा किसी पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। अरे सुनिए, इनको बोलने दीजिए, इनको बोलिए आप इनको बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, बशीर को बोलिए। वाल्मीकि कम्युनिटी की बात करते हैं। अरे हमारे ट्रेडिशन में तो वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि बन गए, रामायण को लिखने वाले। यहां वाल्मीकि कम्युनिटी वाले स्वीपर के अलावा किसी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकता, इवन इफ ही इज पोस्ट ग्रेजुएट। आई थिंक द वर्स्ट इंडस्ट्रियल फॉर्म ऑफ manual, and you will not oppose for it. And as far as one more thing, as far as the women is concerned, शांत हो जाइए। आप एक दोनों एक साथ, स्वीपर के अलावा कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। What you are talking about? Everybody. Now on the debate. Bashir Assad. Bashir, there are number of IAS officers. How you are saying that they cannot apply anywhere? They are bound by constitution that they can have only and only the job of sweeper. और मैं कहना चाहूंगा, ये दलितों के जितने मसीहा, ये दलितों के जितने मसीहा है ना, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटेगा। एक शब्द नहीं फूटेगा दलितों के मसीहा के ऊपर। ये जिग्नेश पे वाडी इस पे नहीं बोलेगा, ये मायावती इस पे नहीं बोलेंगी। ये जितने भी आ रहे हैं स्वयं दलितों के मसीहा को बशीर असद सर, बड़ा कंसर्न है आपको दलितों और वाल्मीकि के हवाले से। बड़ा कंसर्न है एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न। जम्मू एंड कश्मीर को बाहर लेकर आप मुझे बताइएगा दलितों और वाल्मीकि के साथ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उनको अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल Let Pushpendra speak. My point is this. Bashir, stop. No, Bashir. John, stop. आप सुनिए पहले। Don't be Bashir. आप Bashir and Pushpendra. हमारी आइडेंटिटी खतरे में है। आपकी आइडेंटिटी खतरे में नहीं है। 4 परिवारों की आइडेंटिटी खतरे में है। उनकी सियासत खतरे में है। उनकी हेजेमनी खतरे में है। आप क्या झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए, कहीं दुनिया के अंदर कानून बना करके किसी से यह कहा जा सकता है कि तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो वो दलित ही बनेगा, उसका बच्चा पैदा होगा तो वो सफाई। आप बता रहे हैं, John, नहीं है। प्रैक्टिकली वही कर रहे हैं। यही कैलिफेट बनाएंगे। Stop it. When I say Pushpendra and you are debating, that's a final word. ये जनाब फ्रॉड चला रखा है। Stop it. I am stopping the debate. RSN, you will stop. RSN, you will stop the debate. You will stop it now. You will stop it now. राणा साहब will stop it now. You will stop it. You don't. आपकी आइडेंटिटी ये है कि आपने कश्मीरियत को वहाबियत में, इंसानियत को हैवानियत में आपने तब्दील कर दिया है। ये आपकी आइडेंटिटी है। आप क्या बता रहे हैं? John, wait. I now, before, and I went to tell you this. You debate. Don't get over emotional. Relax. Understand, I'm making a point here. There is an argument which is there on the other side. And I want to argue reasonably. Abusing each other is one thing. I am saying, and Sohail, think about it. I am an Indian citizen. Okay? And Omar Abdullah says Jammu and Kashmir's future lies within the Constitution of India. My constitution gives me equality before the law. Then you cannot deny me that equality before the law. You cannot deny the Safai Karamcharis. You cannot deny me. I have the same rights. I can go. I should be allowed to go. I'm not a law and order threat. And I'm saying to you today, you know this, that Kashmiris need jobs. If I were to tell you, Sohail, that you and Bashir Assad cannot work in New Delhi or Kolkata or Chennai, you would say that I feel I'm not being treated like an equal Indian citizen. If you tell all Indian citizens that you cannot work, you cannot settle, you cannot move freely, you cannot reside in Jammu and Kashmir, then the problem will be, and you debated, but he has to be allowed to speak. Because when he was speaking there, सब लोग नहीं Pushpendra जी नहीं आप पिछली बार बोल रहे थे, and no Pushpendra जी नहीं मैं इनको बोल आऊँगा आपके पास. I say today that has to go. We are growing as a country. Break the unnecessary barriers. No, I want him to speak. Then you can have. Either you let me speak or I'm not stopping you. No, of course, when you are at the helm,
of course you have to take responsibility for that also. Okay, I have no stop. Please continue. Yeah. I take responsibility. Now, respect that. First and foremost, this whole idea of people not being allowed to move, not being allowed to work there is absolutely fallacious. Because there are hundreds and thousands of people from many parts of the country who are working there right now. They are working there in various sectors. Sushil. Yes, they are not part of the government jobs. Yes, relax, wait. Pushpender, so therefore, let us stick to the facts. Number two, this whole idea, why are you so concerned about this whole idea of movement and restrictions and special provisions only about Jammu and Kashmir when there are special provisions in 13 other places in this country? I'll tell you. Can you buy land in Himachal? And you, Arnab Goswami, you are very passionate about Northeast. Would you tell the nation that only 5 days ago, on 28th of last month, that is July, in Meghalaya, the Khasi Council, with absolute majority, passed a resolution on the similar lines, saying that any local lady marrying outside the tribe would lose her status of being the tribals. You did not debate that. In the in the month of May, you had the Sikkim Chief Minister notifying and officially saying it. Similar things. You people did not. You are discussing and debating all this only because you have ulterior motives of trying to attack the special status of Jammu and Kashmir. And that remains a constitutional guarantee, whether you like it or not. That's a solid. Okay, no, he's debating. No, you're debating with him, first of all. Yes. I will respond to you. Yes. I will give you a fitting response. Yes. I will give you a more than fitting response. Please. Don't you worry about it. Yeah. But he wants to respond first, so I'll go to him. They are the scheduled tribe, deprived since 1,000 years. And you people represent the rulers of 1,000 years. And still you are saying you want to equate them. And one more thing, there is not that type of logic. There is not that type of logic. भाई वाल्मीकि आप ये कहें कि साहब हम सिटीजन नहीं मानते, लॉजिक समझ में आता है. अगर आप सफाई कर्मचारी में अप्लाई करेंगे तो मान लेंगे, बाकी में नहीं मानेंगे. ये लॉजिक नहीं. देखिए, दूसरी बात, अगर आपने प्रॉपर्टी की बात कही, साहब अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शादी कर ले तो प्रॉपर्टी का राइट नहीं खत्म होता है. पर जम्मू कश्मीर से दूसरी तरफ शादी कर ले तो प्रॉपर्टी का राइट खत्म हो जाता है. ये गलत है. ये लॉजिक समझ में नहीं आता. ये लॉजिक समझ में नहीं आता. औरत को प्रॉपर्टी का राइट नहीं है. और द सो कॉल्ड मनुवादी व्यवस्था जिसकी बात जॉन दयाल जी कर रहे थे कि वो सफाई कर्मचारी बनेगा, वो आपने यहाँ पर खड़ा करके दिखाया है. सुनिए अर्णव, ये वो लोग हैं, एक सेंटेंस, ये वो लोग हैं ना जो एनिमी प्रॉपर्टी की वकालत करते थे कि जो पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टी का कंपनसेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी. देश को पता नहीं मिलेगा. सुधांशु त्रिवेदी, आज आप देश के सामने हैं, सब सुन रहे हैं, तो इनको यह भी बता दीजिए कि आज आपको इन लॉज की बड़ी परेशानी है. जिस वक्त आपको पावर लेना था, जब पीडीपी के साथ सरकार बनाई, तब आपने लिखित दिया, बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर उसको हाथ में लगाएंगे, कुछ भी करेंगे. और सुधांशु बोलिए. Whatever was we have not said that we are against it. There were several number of things. So again you are saying that PDP agreed to our Ram Mandir agenda. PDP हमारा राम मंदिर के साथ थी क्या? नहीं थी तो बस ठीक है. तो हमने कहा हमारा एजेंडा हमारे साथ था, उनका एजेंडा उनकी तरफ. We never said कि उनका एजेंडा हमारा है. What is your stand officially? We are saying our official stand is very clear. What? But do not want this. What is your official stand? We do not want this type of any discrimination. No, but your government has been reluctant. They have not given their... Reluctant. Now we are saying we are firm and adamant. Then you are saying reluctant. What is your stand? As a political party, our stand is clear, and now you respond. What is your stand? No, please don't give your response in the studio. Do it in the Supreme Court. Do it in Supreme Court. अरे कैसा जवाब देंगे आप? आपको सत्ता जब सत्ता चाहिए होती है तब आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ठीक है. लिखित दिया. You quote a single instant BJP support Article 35A. I challenge. You give a single statement. In a national context. In a national context. आप इसको मेरी नजरिए से देखिए. एक मिनट रुकिए. आप इसको मेरी नजरिए से देखिए. मेरा नजरिया यह है कि पिछले 2 हफ्तों से देश में डिबेट हो रहा है NRC. तो मैं कह रहा हूं, what is the great mistake that the people and the government of Assam and India have done, that they've had an NRC? They've done a damn good thing.
because we want to kick the Bangladeshis out. Now, I want to understand in my country, you'll say the Bangladeshis come in, take my jobs, take my land, destroy our culture, right? Rohingyas come in, destroy our culture. Then I want to ask you today, why are you for or against the Rohingya settlements which are outside Jammu? Are you for or against the Rohingya settlements which are outside Jammu? And I ask you today, in a national context, international context I'm saying this. What kind of a country, I must be allowed to complete my sentence. I say today, what kind of a country do I live in? Where Bangladeshis can come anywhere in India and Myanmaris can settle in Jammu and Kashmir and they are welcome. But Kashmiris, Pandits cannot live there, and where Kashmiri women who marry outside will be denied their rights, and when either me or Sushil Pandit or Pushpendra or Sudhanshu Trivedi cannot even reside, settle or work in Jammu and Kashmir, what country welcome Bangladeshis throughout Indians? Can I say something? What logic is this? Can I say something? Yeah, you have nothing to say. Of course I have. You have nothing to say. Because you won't let me say that. You know that. You know I have a lot to say, but you won't let me say. You that won't is the problem. answer my question. No, I will tell you. Answer my question. The answer is that any illegal. अरे मैं आपको ये कहता हूँ. Nobody is giving rights to. And I want to know what kind of a country I'm in. I want to. You have no. एक मिनट. Then I'll be quiet. Then I'll be quiet. देवेंद्र राणा बैठे हैं चुप से बहुत देर से. मेरी बात सुनिए. ये देश में हम शाह फैजल जैसे जो लोग हैं, जो IAS ऑफिसर अपने आप को कहलाते हैं, he's an IAS officer. He gets a salary from the government of India. Fellow sits in America and calls my country Rapistan. And that person says that, and everyone on it, that person says, I will compare 35A to a nikah nama, you repeal it and the relationship is over. Who the hell is he? Who doesn't even respect his own country, calls this country Rapistan to provoke the secession of Jammu and Kashmir from the Union of India. That man should be thrown out of his job for doing something. He incite and provoke in this manner. Can I say something now? Thrown out of his job for doing this. The problem is that you are... Devendra Rana chup kyun? And I asked Rafi Ahmad Mir on the screen. Aunga. Rafi Ahmad Mir screen par hai. Rafi Ahmad Mir screen par hai. Rafi Ahmad Mir ko पूछूंगा मैं. Devendra Rana chup रहिए ना please 2 minute. अरे मेरी बात सुनिए. मैं कह रहा हूँ ये कौन धमकी? मैं एक बात अर्नब, I'm submitting one line. I want to listen to Devendra Rana once. Silence, please. Be disciplined. To the 2 guests in Srinagar, I want to ask the guests from the PDP. Itni hypocrisy kyun? Yes, no, Devendra Rana, you are on air, but I want to ask Rafi Ahmad Mir. Itni hypocrisy kyun? Now you bat for 35A. Did you not see the intentions of the BJP if they wanted to remove 35A when you shared power with them for 3 years? I want to ask Rafi Ahmad Mir. He has nothing to say. Who told you this? Because your problem is Rafi Ahmad Mir. I'll tell you very briefly. Kindly listen to me. Listen to me. This is my information. You have a bad habit of intervening and making sure. Kindly listen to me. Nobody in your alliance, when we went for the government formation with BJP, all such things were put on back burner, and Article 370, which was in existence there, continued to be there till we were in the government. Now remains the question of 35A today, which you are debating. Initially, we must all understand those who are in the panel, everywhere else, this is in the honorable court, is the apex court. We have an honor for the court and we have expectations that judgment will be very fair. First of all, we have to keep this thing in mind. Secondly, you are forgetting the Devendra Rana with him. Of relationship. Devendra Rana, do you believe him? Devendra Rana, do you believe him? Sometimes do you believe him? Do you believe the PDP spokesperson? If you allow me to talk, I'll talk. If you allow me to talk, I'll talk. Allowed, both of them. You don't allow. It was temporarily only to the extent that that time certain other promises were done to the people of Jammu and Kashmir, and there was a Delhi agreement, and after 2 years of this in 1954, this law has been there. In 1927, from Maharaja's time. Sir, you are so hypocritical. You've remembered all this now. Devendra Rana, respond karen and then I'll come back to the debate. Devendra Rana wants to say something to you. My question is, as Devendra Rana responds to you, Mr. Mir, Devendra Rana is responding to you. He says that you've remembered all of this now that the BJP has kicked you out. So you're more hypocritical than the BJP. Devendra Rana.
and then I'll come back to the panel. This is your own view, and you are imposing it on one and all. You try to understand the genesis of very relationship of India with Jammu and Kashmir. Okay, now Mr. Rana is speaking. Thank you. Thank you. Mr. Goswami, Mr. Goswami, a minute just to clarify certain facts before it gets more distorted and the shouting brigade starts. POK refugees are permanent residents of Jammu and Kashmir, and they have all the rights that all permanent residents have. 1. 2. Kashmiri Pandits are class 1 permanent residents of Jammu and Kashmir. Number 3. The women's rights is a matter stayed by the Honorable High Court, and the matter is sub judice, and the status is that they enjoy the rights all that are available, and there's no gender bias. Big lie on the television, yaar. That state subject law. The state that is. Wait a minute. Let me complete. भाई आप बोल रहे हैं वाल्मीकियों का जहाँ तक सवाल है. Complete क्या? Complete तो आप झूठ बोल रहे हैं continuously. इसके अलावा आप कुछ नहीं बोल रहे. They came during Bakshi Ghulam Muhammad's time, and there's a provision in the 35A where the state legislature can always take them as permanent residents. That is it. Now, having said all this, on the issue... अरे भाई आपके जम्मू की सड़कों पे पिछले 60 साल से आप किसको झूठ बोल रहे हैं कि पीओके के लाए हुए लोगों को आपने पीआरसी दिया है? पिछले 60 साल से आपकी सड़कों के किनारे बैठे हुए लोग आपने 6 लाख से आप सुनिए आपने इतने सारे लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी है. वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में वोट नहीं डाल सकते, वो पंचायत में वोट नहीं डाल सकते, और आप कह रहे हैं कि हम रोहिंग्या को आधार कार्ड देंगे. आपने आधार कार्ड देने को बता दिया. आपके सर पे जो लोग बैठे हैं वो कश्मीरी हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू है इसलिए नहीं देंगे. आपने 1957 का जो आप बताते रहे, आप 70 साल से एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की बात करते रहे. बाद में दस्तखत किए पीडीपी के साथ. आपने कहा ये गारंटी हम मेंटेन करेंगे. आपने दस्तखत किए. उसकी वजह क्या है? आपका कम्युनल एजेंडा है. आपने 3 लाख लोगों को कश्मीरी हिंदू पंडितों को भगाया, और 35A के तहत 7 लाख कश्मीरी को आपने बाहर रख दिया. आपने सिटीजनशिप नहीं दी. आप कौन सी कश्मीरियत की बात कर रहे हैं सिवाय नेशनल टेलीविजन के ऊपर? और ये पीडीपी के साथ जो है, इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. बहुत इज्जत की बात कर रहे हैं. पीडीपी से पूछना चाहता हूं मैं, आप बताएं कि आपके मोहतरमा वज़ीर आला ने क्या कहा था कि अगर 35A के साथ छेड़छाड़ हुई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को कंधा देने वाला किसने बोला था? ये किसने? मुफ्ती मैडम मुफ्ती ने बोला था. ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई नई बात नहीं मैं कह रहा हूं. और उसके बाद मैंने कहा ये हुआ, ये तो कोर्ट में और है भाई. और आप धमकी के सोचे सुनिए उनकी बात. तिरंगे को झंडा आर्टिकल 35A जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा. That is our view, that is our party's view, that is view of the rest of the party. मुफ्ती ने कहा कि तिरंगे को कंधा देने वाला जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा. ये हलफ लेकर के बात करने वाली वज़ीर आला है. ये आपका करेक्टर है. ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में 35A नहीं तय होने जा रहा था. ये हिंदुस्तान की अदलिया में होने जा रहा था, अदालत में होने जा रहा था. ये जजों के ज़ेरे गौर था. उसके बाद आपकी भाषा है. Now I go back to the debate in the studio. What's it? Now in the studio again. Now Bashir is asking Pushpendra. Silence. Bashir is asking Pushpendra something, and Sushil wants to come in. Bashir साहब कहिए. नहीं पहले Bashir and Sushil. Now Bashir and आप सुशील को ये आप इनसे बात इनसे पूछिए उस वक्त बात क्या है? सवाल है सुधांशु द्विवेदी. On the issue of this, अभी पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने क्या बोला कि दैट हैज बीन पुट ऑन बैक बर्नर. तो आपकी बात का जवाब आ गया. हमने कभी नहीं छोड़ा. हमारे तो 370 हमारे आर्टिकल में भी है. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिशन इट वाज नॉट देयर. सरकार में रहेंगे तो कुछ नहीं होएगा. जब तक गवर्नमेंट रहेंगे छेड़खानी नहीं होगी. मगर हम इस बात के लिए हमारी गवर्नमेंट में रहते हुए वो हुर्रियत का नेता जो पिछली गवर्नमेंट दामाद थे उन पे कार्रवाई हुई हमारे द्वारा. ईडी के केस में वो हमारे रिजीम में ऑपरेशन ब्लैकआउट गवर्नमेंट रहते हुए चला, और गवर्नमेंट से अलग हुए तो कुछ रीजन थे ना. मगर आप ये बताइए, हम गवर्नमेंट में रहते हुए भी हमारा ये मन था
हम करने की स्थिति में नहीं थे। आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, मगर आप अपना स्टैंड बताइए, आपका स्टैंड कभी भी करने की स्थिति में, सुनिए, आप तब स्थिति में नहीं थे, आज नहीं है, कभी नहीं होंगे। आर्टिकल 35A is going to stay there। सुनिए, और कॉन्स्टिट्यूशन